दशकम् 6 विराट् स्वरूपवर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयदां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वसन्ति पादोर्ध्वदेशमभिते परसातलं ते कुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमदो सुतलं च जानु किञ्जोरुभागयुगलं विदलादले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिर्वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे श्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तवस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयदलो जगदाश्रितैरपि अन्यै निबद्धवपुषे भगवन् नमस्ते तद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्त चन्दाम्बिकेशभगना तव केशभासाम् उल्लासिदिल्लियुगलं द्रुहिणस्य केकम् पक्ष्माणि रात्रिरिवदौ सविराजनेत्रे निश्चेषविश्वरजनाथ कटाक्षमोक्षक कर्णौ दिशो श्रीयुगलं स्तवनाधिके द्वे लोभत्रमे च भगवन्नदरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दजना शमनश्च दंसा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वादलं वदनमीश च कुन्दपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणामुगरन्ध्रमग्निर्देवभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं दधर्मैकदेवमनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षे समुद्रनिवहावदनं तु सन्ध्ये शेव प्रजापतिरसौ वृषणौ जमित्रः श्रोणीतलं मृगगणा पदयो नगास्ते अत्युष्टसैन्दवमुपागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणो सिकुलानि शैला नाट्यस्तरित्समुदयस्तरभक्षरोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमेष ये जगन्मयवपुस्तव कर्मबाधाम् कर्मावसानसमये स्मरणीयमागुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वादालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् ॐ श्रीं दामोदराय नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।